और हम लोग बातें उत्तराखंड की शो को लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। व्हाट कुड बी अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द ईयर देन टॉकिंग अबाउट एजुकेशन and talking this topic with somebody who has been into the field of education since long. आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर शोभा पाठक जी हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। शी इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर और मोटिवेशनल स्पीकर है। सो ग्रेट स्टार्ट ऑफ द ईयर टू हैव समबडी लाइक हर ऑन द शो विद अस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पे। Thank you so much, Mr. Negi. It's a pleasure coming on this talk today, the first day of the first month of the first, episode rather in the new year. So it's a bright beginning. जी जी, बहुत सही बोला आपने। आई थिंक व्हाट कुड बी अ बेटर स्टार्ट। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, बट जैसे कि हमारा एक रिचुअल है, हम अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले we always prefer to show the introduction video of अमृता देवी फाउंडेशन। तो चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं और अमृता देवी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम अपने इस कन्वर्सेशन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। Sure. अमृता देवी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2019 में उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान के लिए की गई। हमारा विजन उत्तराखंड की महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने साथ अपने परिवार का भी देखभाल कर सकें। टू अचीव दिस विजन, वी विश टू डेवलप स्किल्स in the women in Uttarakhand and also provide employment opportunities to them. Further, we established Amrita Devi Women Skill Development Institute, जिसके तहत हम महिलाओं को 3 तरह के कोर्सेज कराते हैं: टेलरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डिजिटल मार्केटिंग। इन सेंटर्स में हम लोग महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पे ही नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी वर्क करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एवरी सैटरडे उनके लिए पीडी सेमिनार और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी चलाते हैं। हमने उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में वहाँ के बच्चों को शूज़ डोनेट किए थे, स्कूल बैग भी उन्हें हम लोगों ने दिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने उन्हें कपड़े, टॉयज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और जब भी कोविड का टाइम आया था, तब भी हम लोगों ने वहाँ की जो उत्तराखंड की जो फैमिली हैं, उनको हमने ग्रोसरी किट दिए थे। और हम अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। I would like to invite you to be our volunteer, for which you need to spend 1 to 2 hours in a week. If this sounds interesting to you, आप हमें हमारे फेसबुक पेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप ऑन द बिलो नंबर, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल ID amritadevifoundation2020@gmail.com. We are providing these vocational courses to the women in Uttarakhand free of cost. The expense on a student is ₹5100, which is फंडेड बाय अमृता देवी फाउंडेशन। अगर आप हमें हमारे इस कॉज में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक स्टूडेंट की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं बाय डोनेटिंग ₹5100 और एनी अमाउंट यू विश टू डोनेट। टू डू सो, यू कैन पेटीएम अस ऑन द नंबर बिलो, और you can pay us by clicking on the link mentioned below. Let's build Uttarakhand together. Let's build Uttarakhand together. Well, that is our presentation for अमृता देवी फाउंडेशन। और मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, और शोभा जी आपके लिए भी,
कि इस लास्ट गए हुए साल में 2022 में हमने अपने कंप्यूटर सेंटर भी ऑपरेट किए मल्टीपल प्लेसेस पे, और साथ में हमने महिलाओं के लिए टेलरिंग का जो कोर्स है वो भी किया। बट जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा वो रहा डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें कि जो हमारी बच्चियां थी वो बहुत दूर दराज के गांव में बैठकर भी अपनी एजुकेशन कर पा रही थी। आई थिंक अगर हम लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की पावर को यूज करें तो जो एक हमारा सोसाइटी में इम्पैक्ट जनरेट करने वाला काम है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। इस वक्त हमारा शोभा जी एक बैच भी चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके एडमिशंस अभी हमारे क्लोज हैं, अब हम और एडमिशंस नहीं ले रहे हैं उसके अंदर। और उस बैच में हम लोगों ने जो करीब 70 से 100 बच्चों को एनरोलमेंट किया, और एक इनिशियल प्रोसेस के बाद 40 से 50 बच्चे जो हैं उस कोर्स को कर रहे हैं। करीब 3 महीने के कोर्स का वो ड्यूरेशन है, और अभी से ही हमारे पास रिक्वेस्ट आने लग गई है कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ इंटर्नशिप पे दे दीजिए। एंड इंटर्न्स जब वो इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो उन बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, और आई थिंक कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए हमने एक रास्ता चूज किया है, और मैं कहूँगा थैंक्स टू ऑल आवर वॉलंटियर्स, वी आर डूइंग प्रीटी गुड। मैं ममता सेठी की जो एक अनाउंसमेंट थी इस वीडियो में उसको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि अगर कोई भी अमृता देवी फाउंडेशन के साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहता है तो वो हमारे लिंक जो हम अभी अपने लाइव टॉक पे देने वाले हैं उस पे जाके भी अप्लाई कर सकता है और अपना टाइम स्पेंड कर सकता है इस सोशल कॉज के लिए। और साथ में अगर आप हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो भी हमारी टीम आपको एक लिंक देगी जिसमें आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा से इस नए साल के उपलक्ष्य पे, टू सपोर्ट द गर्ल्स इन देयर एजुकेशन। और एजुकेशन से ज्यादा आई वुड से कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का जो एक काम हमने चूज किया है उसी पे हम फोकस्ड हैं, तो उसको आगे बढ़ाएं। तो ये अपडेट्स थे हमारी ऑडियंस के लिए। आई एम श्योर दे मस्ट बी हैप्पी एंड ग्लैड टू नो कि 2022 हमारे लिए एक अच्छा साल गया और हमने बहुत अच्छे लेवल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा पाठक, और वो जैसे मैंने बताया कि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर आवर कन्वर्सेशन टुडे अमृता देवी फाउंडेशन के बिहाफ पे। और हमारा जो टॉपिक है वो है चूज द राइट एजुकेशन, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी की। एजुकेशन को लोग बहुत डिफरेंट तरीकों से समझते हैं। कभी कभी एजुकेशन को केवल एक 10th 11th 8th 9th पास करने की तरह सोच लिया जाता है, बट डॉक्टर पाठक बहुत एक डिफरेंट व्यू रखती है, एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव कन्वर्सेशन विद हर। सो वेलकम अगेन डॉक्टर शोभा on our show, and thank you for finding time on the first day of the year to have conversation with us. Well, thank you so much, Mr. Negi. You have given me a wonderful opportunity. First day of the first year and the first work that I am doing, and that too for our girls, that too for our females, that too for those ladies who are the deprived lot. You will wonder why I use the word deprived, but if someone doesn't get anything on a platter and doesn't get anything after effort, वो deprived हो गया. So those girls who are not able to learn, those girls who are not getting the opportunity, Amrita Devi Foundation is doing a wonderful work for them. And whatever you are doing, such work is the need of the hour. Such work is the requirement in society. And I hope more people, more and more, NGOs come up with such selfless service as you people are doing. And only then, तभी हमारी society जो है भारत महान तभी होगा। अर्धांगिनी ऐसे ही नहीं, when you are contributing to the family coffer, जब अपने कंधों पर अपने खर्चे लेके चलते हैं और लो भाई हम आपको भी देंगे, then it is what we are aiming for. So well said, so well said. Thank you very much once again for being part of this conversation. और मैंने अपने ऑडियंस को तो बताया डेफिनेटली आपके बारे में, बट इट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू अबाउट योर ओन जर्नी। आप एक रिटायर्ड ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, तो मे बी लेट्स हियर मोर। आई थिंक देयर लॉट इन योर अकम्पलिशमेंट लिस्ट, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपकी जो लाइफ जर्नी वो कैसे रही, क्या क्या किया आपने, so that we can have a connection between you and audience. Yeah, definitely.
I think I should start now and see. Good morning, audience, and good morning, Mr. Negi. And once again, thank you so much. And bachon, I hope, and I'm very sure, I am the eldest here. I am 68. So I will address you sometimes as bache and sometimes, of course, Mr. Negi, because you are here. So it will be Mr. Negi as well. Dekhiye, I was born in a family of freedom fighters. And those principles and those values, they were practiced at home as well. It was not like that those freedom fighters wo hote the or bas naam ke and for the laurels. In 40s, it was not like it. And my grandfather, he practiced. We did not have a servant. And everything we used to do on our own. So there were only two things in our lives. One was doing your own work and one was study. In those times, in my family, we did not have the Parda Pratha. 1940. We did not have the Parda Pratha. In our family, it was only and only education. And with these values, I grew up. So it was always rising early. And we had this feeling that we have to work, we have to study. और हम कुछ पढ़े नहीं तो हम कुछ नहीं है. जिंदगी में ये था. And you will very well understand the first movie I saw was in class 10. ये तो कुछ था ही नहीं. The modern technology wasn't there. And still, we were reading the scriptures, we were reading our class books, we were reading our newspapers religiously. Newspaper ऐसे नहीं कि अपनी पसंद का कुछ देख लिया and over. So with this background, definitely, all siblings, they excelled in studies. We are all PhDs, and all of us, we have read only on scholarships. High school ki scholarship, I was the only girl student or only student to secure a first division in high school in the entire Mathura district. तो वहां जाना पड़ा अमर उजाला प्रेस में to confirm whether this is true. कहीं पता चला कि second division है और ऊपर ऐसे ही roll number आ गया. So that scholarship helped me throughout intermediate, and intermediate helped me throughout graduation, and graduation led to post-graduation, national scholarship holder, topper in the university, and all these achievements led to doing PhD in 79 with scholarship and leave, staying at home, nursing the baby, getting married, doing everything, and PhD bhi karo. 2 years fellowship I got, and that's it. Now, when you are really studying, जब आपको उसके results मिलने लगते हैं, this is motivation itself. आपको कुछ जरूरत ही नहीं होती है. जब आपका पढ़ना आपके लिए एक नशा हो जाता है. You don't opt for anything. That is the passion. That is the priority. कि पढ़ना है. It can be like we have students I have seen all through जो 3 महीने पढ़कर एग्जाम क्लियर कर लिया. There are students who are coming regularly to college. So when I was getting the results, only as soon as I cleared my post-graduation, that was in July, the results were out. In August, I got a job in Agra College. Again, there was a lacuna. In those days, no females were allowed to work. Parents पीछे हो जाते थे. Despite the modern and the very radical outlook, my grandfather said, नहीं, job करना है तो girls college में करो. And I quit Agra College and came to Mathura, where I retired as principal. So with 43 years, 3 months of service, now how can a person sit at home? आदत खराब हो जाती है. You need to wake up early. I still get up at 4:30. You need to do all that you have been doing. And the time that you get in between 10 to 4, you have to utilize in other things. So this is an introduction. And those other things involve motivational speeches. Those involve going to Nari Niketan. Those involve going to some NGO, to some leprosy, to some women welfare society, things on and so on and so forth. That's great. Thank you very much. I think इतनी बड़ी जर्नी को इतने कम समय में बताना वैसे ही बहुत मुश्किल है.
बट आई थिंक इट वाज ग्रेट टू नो, क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर एक गर्ल एम्पावरमेंट को लेके जो एक थोड़ा सा भावनाएं बनी हुई है, वो आई थिंक आप जैसी पर्सनालिटी के थ्रू ही ब्रेक हो सकती है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू चोज टू वर्क फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, एंड इवन इन योर प्रोफेशनल प्रायोरिटीज आपने उसको ध्यान में रखा. So that is so glad to know. In fact, this is what we also believe, अमृता देवी फाउंडेशन also believe, कि कहीं ना कहीं अगर हम गर्ल्स एंड वुमेन पे काम करते हैं तो वी मेक अ बिगर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. देखिए, काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए, और कोई भी काम गलत और सही नहीं है. अगर आप कोई एक अच्छी भावना से सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप गरीबों पे काम कर सकते हैं, बच्चों पे काम कर सकते हैं. मतलब देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स और लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. बट मेरा हमेशा मानना होता है कि अगर आप एक प्रॉब्लम को चूज कर लो, एक चैलेंज को चूज कर लो और उस पे ही लगे रहो, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि हर किसी के पास वो लिमिटेड है, और ऐसे बहुत सारे लोग करने लग जाएं तो आई एम श्योर कि एक अच्छा नेशन बिल्ड करने की तरफ हम लोग अग्रसर हो पाएंगे. सो थैंक यू, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस इज नाउ एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद यू बेटर. और आपने एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया है, और स्पेशली वुमेन एजुकेशन फील्ड में आपने बहुत काम किया है. तो मे बी हमारी जो आज की कन्वर्सेशन है वहीं से शुरू करते हैं कि भाई एजुकेशन है, हम एजुकेशन के बारे में हमेशा बात करते हैं. व्हाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी वुमेन है एट एनी एज. व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम? मिस्टर नेगी, जैसे खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी एजुकेशन है. आप सांस ले लीजिए, खाना खा लीजिए, जिंदा तो रहेंगे पर जिंदा नहीं रहेंगे. यू कांट से दैट यू आर अलाइव, यू विल बी डेडली. बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप एक शब्द में तो बता ही नहीं सकते. एक्चुअली पढ़ाई फ्रेम्स द डेस्टिनी नॉट ओनली ऑफ अ फैमिली बट ऑफ द एंटायर नेशन, ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. इट इज सेड कि even Nelson Mandela said, if it is the most powerful tool which can change the destiny of the world. If you want to spoil a nation, just say यहाँ की future generation does not study, it is uneducated, and the nation will, the prosperity will go away forever. So for the future of any nation, for the future of any family, एक पान वाला भी जो होगा पैसा कमा लेगा, बट असली सुख उसका है जिसके बच्चे पढ़ गए. All those people who are leading a content life at home, whether it is a couple, whether it is a family, those who are happy in their old age are only those persons whose children are educated, doing well for themselves. I have my colleagues who are spending their pension on the family of their sons. उसके ग्रैंडसन की फीस जाती है उनकी पेंशन में से, उनके और खर्चे फैमिली के निकलते हैं. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. और सर्वाइव व्यक्ति करता है फ्रॉम द डे ही इज बोर्न टिल ही ब्रीथ्स हिज लास्ट. You cannot say you survive for 5 days, for 5 years, for 50 years. It is the quality of survival that matters. And the quality of survival depends on the quality of education. God, once I read an article and it was said that man is also one of the species. Theory of Darwin. Species. The only thing that distinguishes man from animals is the brain. Now it is up to us how we utilize that brain, and what more importance can we give to the brain if we do not study. You have to study. There is no option. Iska kya karoge? Aristotle said that each man on earth, he's got a talent. Iska reference Bible mein bhi hai. Matthews, I don't remember the lines. It is said that each one of us has got a talent. You have children going to school. Same family, same parents, same school.
almost the same teachers if they are studying from first standard to 10th? How is it that one excels in maths, the other in drawing? Two different talents. Now it is for us to see which talent we are utilizing. We can't force, times have changed. We can't force something on the child. You have to read only this. You have to read only this particular subject. Why? Because of our lost aspirations, because we were not able to do. Because we want to quote your achievements as our achievements in society. No. So this is the problem of the social circle. Coming back to economic circle. The poor people, those who are carpenters, labor, masons, when they come to work, they bring their toddlers along. They bring their small children along, 1 year old, 6 month old. They'll make a small, makeshift arrangement for the child to sleep anywhere, jugaad se. And that small toddler, I have seen that small toddler when the building was being constructed of our institution, he was breaking bricks and he did not damage his finger. There was no boundary on the roof. And this child, he was playing. हम बाउंड्री होने पर अपने बच्चों को कहते हैं पीछे हो जाओ, गिर जाओगे. So that the difference is you have talent in everybody, you have capability in everybody, you have that passion in everybody, only to focus that passion in a proper area. Kahan jata hai? Let me not to the excuse me. There was Milton, and he said that God has given this talent to each one of us. But Milton, he was deprived of his vision, of his eyesight when he was just 33. So what did he wonder? He said, oh, if I don't write, what will happen when I'll go to God? He will question me what I did with this talent of poetic composition. Then he himself says, no, God does not need man's gifts or his own. They serve him best who only stand and wait. Now that stand and wait is for us to understand that हम वो stand and wait ये है कि हमारी opportunities, we have to wait for those opportunities. रोज रोज नहीं आएंगी. Opportunity never knocks twice. But whenever it comes, you have to grab it. That is the opportunity. So education, it is of two types. One is the education that we can say the traditional mode of education. You send a child to school, any school, good, bad, according to your pocket, according to your preferences. You send a child, and that child, irrespective of his interest, irrespective of what he wants from life, he doesn't even know, and he is reading 1, 2, 3, 4 up to 10th automatically because others are doing similar things. So they take admission in intermediate college and then degree college and so on. MA kar liya, and where are they? They are brilliant youth wasted. By the time they are doing MA, they are already 19, 20, 21, 22. So that golden period of life, which there was a poet, Garrett, he said, that is the full bloomed rose, where you don't have any economic difficulty, no physical ailment, nothing, no social problem. That golden period is spoiled. अब 21 साल के बाद खड़े हैं कि क्या करें जिंदगी में, कुछ नहीं आता. Going and just completing the syllabi, the curriculum, reading it carelessly, क्योंकि आपने नंबर तो अच्छे लिए नहीं है. आप घूमते घामते आए, घर से खाना खा कर आए हैं. Parents are happy because your child is going to college, so they are happy, whatever. So this was the state of studies not so very long ago, and it is still in rural and semi-rural India. आज भी यही होता है कि पेरेंट्स सिर्फ ये खुश होते हैं हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है, लड़की कॉलेज जा रही. That's it. So we have to change that mode. A change is coming over. We have to just distinguish this type of
Ghisi pattern of education. I will call it Ghisa Pita pattern of education, and cultivate into into your youth, which can read and write, and at the same time, that person has some caliber, some talent in hand, on the basis of which that person can do and earn something, not only for himself, for his family, and for society. जी When you start from there, then you understand. When the girls, they are coming to college, mine has been a girls college, so when the girls, they come to a degree college, intermediate उन्होंने अपने गांव से किया है. What are they, how they speak? Rural language. है मैडम जी, तुम क्या कर रही हैं? That is the tone. When they're moving in the corridor first day, they are just shaking the hand of the friend. Aja. Volume is immaterial. Now, at that time, instead of losing our focus, we have to tell them, बेटा जी आप कॉलेज आए हो, ये गांव नहीं है, ये शहर है. आज जो आप पर्सनालिटी अपनी बनाओगे यहाँ पर, इसको हमेशा ही आपको आगे मदद करेगा ये आपको. And that personality is framed by speech and action. Either you know a person by the company he keeps, you know a person by how and what he's speaking, or how he presents himself. It is always said, सबसे ज्यादा important आपके shoes होते हैं. जी Shoes चमकते रहेंगे, it tells about your personality. Shoes should be clean. We focus on the face, we ignore the shoes. When you go for the interview, the person who's taking the interview focuses on your shoes, not on your face. And he focuses on the matter you have here. yeah तो जो girls education हो या boys education हो, present times में उसमें hardly any difference. You decide very well in advance कि आपको कहाँ जाना है, कितनी education लेनी है, किस level की लेनी है. और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना प्रोविजन कर दिया है through different schemes, you must be knowing, and yes, our listeners, viewers, they are all aware of it. You have multiple schemes, और schemes के अलावा भी if you are really working hard, तो आपको फेलो scholarships मिलती हैं, आपको उसके अलावा you get loans from banks, and there are so many persons who are just taking loans and studying. लेकिन करना आपको खुद है. You have to work hard yourself. जी इसके लिए हमारा outlook, it has to change. Outlook, when I use the word outlook does not mean copying anyone. आपको अपने आप सोचना है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, क्या मैं अपनी इस फैमिली से सेटिस्फाइड हूँ, क्या अपनी जो लाइफ है उससे सेटिस्फाइड हूँ. I tell my grandchildren, I tell other children also, first your focus should be to earn minimum in what you are staying today. और जो upper middle class है और middle class है, they know that yes, ऐसे रहने और ऐसे घर में रहने और ऐसे खाने के लिए हमें कम से कम कितना earn करना पड़ेगा. That's very true. Actually, I think what I get from you is that first of all, the message that if the mankind has to differentiate itself from other species, we have to make use of our brain. That is the distinguish between us and other species. Yeah, definitely. और आई थिंक जो दूसरी बात आपने बोली कि एजुकेशन नो डाउट ठीक है, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है और हमको सबको उससे गुजरना पड़ता है. बट आपने जो एक व्यू पॉइंट रखा कि एजुकेशन केवल वो किताबें ही नहीं है, एजुकेशन तो आप कहीं से भी कैसे भी गैदर कर सकते हो. और आपका जो एग्जांपल था कि किस तरह से जो लड़कियां देहात के इलाके से हमारे पास आती हैं और वो किस तरह से जब एक एजुकेशन सिस्टम में गुजरती हैं तो पढ़ाई के अलावा जो उनकी पर्सनैलिटी एक चेंज होती है. बहुत I think that they will carry for a longer period of time. और वो एक एजुकेशन हम स्टैब्लिश कर पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा. तो डॉक्टर शोभा, बहुत सारे लोग, हमारी जो ऑडियंस है वो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक दे रही हैं. थैंक यू सो मच. ऑन लाइव तो जितनी भी ऑडियंस ने आपको विश किया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका मैसेज मैं उन तक पहुंचा दिया है हमने.
So yeah, happy new year to all of you as well. और मैम एक बात बताइए कि आपने जैसे अपना रेफरेंस भी दिया आपने कि अपनी एज का, और बहुत सारे लोग इस एज में या तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं या घर पे बैठ के अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का देखभाल कर रहे थे, बट आपने उनके साथ साथ आई थिंक आपने एक नया रास्ता चूज किया कि जो आपने एक एजुकेशन, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम से आपने काबिलियत बिल्ड की है उसको कैसे आप यूज करें और जो हमारा समाज है उस पे लगाएं, स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन उस पे लगाएं। तो आपकी जो ये मोटिवेशन है, एनर्जी है, पैशन है, इसका राज क्या है? कुछ हमें भी टिप्स दीजिए। कुछ योगा है या मेडिटेशन है या क्या चीज है जो आप करते हैं? इसका राज सबसे बड़ी मिस्टर नेगी आदत। किसी भी चीज की लत लग जाती है तो हमें भी समझिए कि जल्दी जगने की लत है। हमारा ये मानना है कि इफ यू गेट अप अर्ली यू फिनिश मोस्ट ऑफ योर वर्क। विश यू से कि नॉर्मली अरे समय ही नहीं मिलता, जैसे वॉक कैसे करें, समय ही नहीं मिलता। एक्सरसाइज कब करें, अरे दिन निकले से तो काम शुरू हो जाते हैं। किसी को एडवाइस दो आप कि एक्सरसाइज, तो वो कहता है कि कितना तो दौड़ भाग करते हैं घर में। छोटे बच्चे कितना खेलते हैं और कितना खाते हैं, है ना। और उनको कभी ये नहीं होता कि चाहे आपको गुड़ देना हो या स्वीट्स देना हो, लीव असाइड वो जो बिगड़े हुए छोटे बच्चे हैं जो चॉकलेट्स और उस पर जाते हैं, यू लीव असाइड, बट अदरवाइज देयर इज नो लिमिट टू देयर ईटिंग एज टीनेजर्स। नाउ आई एम सीइंग स्मॉल चिल्ड्रन 8 इन 8th स्टैंडर्ड, और ये नहीं, ये नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे, ये नहीं करना। अरे क्या, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, and when you are watching the TV or you have the mobile, and thanks to COVID कि ये जो online classes हैं, you never know what the child is doing. I'm dead against these things कि आप actually the knowledge which you get from books उसका तो कुछ जवाब ही नहीं है, because two main organs, they are working, your eyes and your brain. Whatever you read from these eyes, it goes here. And I tell the kids, in your mobiles, whatever you are hearing, it enters from here, it goes from here. So nothing is left here. So reading, even as small students, even when I was in class 1, I used to read the newspaper. And all my children, I live in a joint family, they all read as per their age. To the extent that my daughter, she was just 2 years old, and उसको 1.5 साल की भी होगी, उसे उल्टे सीधे का ही ज्ञान नहीं था, बिकॉज हमारे बेड साइड पे इंडिया टुडे और रीडर्स डाइजेस्ट ये रखे रहता था। एंड आई टॉट द चिल्ड्रन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये पढ़ो, शेख चिल्ली के अंडे। एंड इवन टुडे आई कीप पंचतंत्र की कहानियां अपने इसके ऊपर, तो जब भी सुनाती हूँ और एंड में कहती हूँ अच्छा इसका मतलब अब ये है, तो दे टेंड टू रन अवे कि इसके पीछे भी कुछ मॉरल होगा। But as far as the fitness part is concerned, I've always been an early riser, and हमारे बच्चे भी, ये था कि we get up at 4:30, even today, both of us, and after 20 or minutes or half an hour, we go for a walk, even today. आज भी 5:30 से 6:30 वॉक करा है, ठंड है, कोई बात नहीं, keep yourself fit. If I don't go for walk for any reason, because आजकल हमारा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा ये हो रहा है, it is very foggy in the mornings, so then we do some pranayam, some yoga, and simple habits, neither too much of sweets, not too much of salt and spice. So these things we rely on fruits, vegetables, everything. और ठीक है, जितना जीने के लिए जरूरी है उतना बहुत ईजी। 2 चीजें होती है ना कि जीने के लिए खाओ और खाने के लिए जियो। So we started this very early, in 40s only. तो वो आदत बन गई है, and that is what keeps me fit. And you are very correct, women my age, they have certain complaints and they always tell me कि तुम तो doctor family को belong करती हो. My son and my husband both are doctors practicing. So कहते हैं कि तुम डॉक्टर फैमिली को belong करती हो। तो I said नहीं, इंसान तो हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी होती हैं चीजें। But thankfully, by God's grace, it's like this only.
Very true, So very true. you should lead a disciplined life. Fitness is important for every phase of life. It keeps one mentally and physically alert. And अगर आप fit होते हैं तो greatest advantage is, see, it is said, laugh and the world will laugh with you. Weep and you weep alone. So one day, 2 days, even your family, they will bother about you कि भाई आज ही बीमार हैं. So ठीक है. But if it becomes a habit, then even your better half will say कि भाई इसका तो रोज यही झंझट है, do your work. So that's better. And when I fall ill, although rarely, then I become a VIP. Everyone wonders कि हाँ ठीक है, आज सचमुच गड़बड़ है. कि आज अगर बीमार है तो सचमुच कुछ गड़बड़ है जिसका ध्यान रखने की जरूरत है. बट थैंक यू वेरी मच, दिस इज सच अ ग्रेट लेसन. और आपने आदत की बात करी और आपने बुक्स की बात करी, तो दिस रिमाइंड्स मी अ बुक कॉल्ड द पावर ऑफ हैबिट्स. अगर हमारी ऑडियंस इसको पढ़े तो आई थिंक शोभा जी ने बहुत सारी बातें उसमें कही कि अगर आप एक हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं वेरी डिसिप्लिन्ड वे, अच्छी हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं अच्छी वेरी है. डिसिप्लिन्ड वे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प यू टू फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव आल्सो अ बेटर पर्सन. Yes, you remain alert. You don't forget things. If you're fit, you don't have a complex. You don't have to shed away from going anywhere. अब ये होता है कि नहीं जाना है तो जाना है, ठीक है, what happens? Nothing. तो सर्दी है या गर्मी है, so everything is a state of mind. आई कैन से दैट बिकॉज जिस तरह से एनर्जी से आज आप बिल्कुल सुबह रेडी थे और आपने पूरा सेटअप वगैरह रेडी किया, आप बिल्कुल मिशन पे थे कि आज मुझे सुबह इसमें जाना है, आई हैव टू आल्सो लर्न कि टेक्निकली इसको कैसे करते हैं. सो हेड्स ऑफ टू यू. मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर कि मुझे लगता है कि आपके इस एनर्जी के पीछे जो एक सबसे बड़ा और मुझे लगता है जो हो सकता है एक रीजन है, वो है दैट यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. Yeah, definitely. आपके पास एक पर्पस है, आप उस पर्पस के लिए सुबह उठते हैं और पूरे दिन काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि लाइफ पर्पसलेस है और केवल अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित है. आपने एक बहुत बड़ा विजन लेके रखा हुआ है और उस विजन को करने के लिए आप खुद भी एनर्जेटिक रहते हैं और आसपास के लोग हैं उनको भी आप क्या कहते हैं एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं और एनर्जेटिक बनाती हैं. सो इट इज सो गुड टू हियर दैट. सो कीप दैट पर्पस. आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है अगर आज वो इस साल की शुरुआत करना चाहती हैं तो दे शुड आल्सो हैव सम पर्पस, चाहे छोटे ही हों चाहे बड़े हों, हैव सम पर्पस इन देयर लाइफ. सो लर्न फ्रॉम डॉक्टर पाठक ऑन दैट. No, one more thing, Mr. Negi, I want to tell. जी मैम. कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम. तो it is always advisable, it is always good कि आप विद्या का दान करते रहिए. It is also like a bank balance. Like even you can promote a child to teach the younger sibling at home. If a child is in 3rd standard, maths कर रहा है और first वाला maths नहीं कर पा रहा है, to help that person, that child out, instead of कि मम्मी पापा ही उसको help कर रहे हैं, उसके parents help कर रहे हैं. This is one thing. And whatever knowledge you have, whatever knowledge, I'm not focusing only on books, but whatever knowledge, whether it is handicraft, whether it is pickle making, whether it is just telling a child how to study, how to dress well, how to you have personality development, so that also makes a huge difference. How to make a particular hairstyle, तो ये सब बातें किसी को आप हेल्प आउट करते हो, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ. आपके तो प्रैक्टिस हो रही है. I was not good at maths, but in BA psychology we have statistics, and there was a book by Garrett, and I practiced all the problems that were in that book. And there was a friend of mine, a next door neighbor, she could not follow mean, median and mode. तो मुझे बुलाती थी कि शोभा प्लीज हेल्प मी आउट, एंड एवरी इवनिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज एट होम, मैं रोज उसके पास जाती थी. One home away, I used to go to her place and I used to solve for her and teach her कि देख ऐसे कर ऐसे कर. In the examination, you won't believe, Mr. Negi, the sums that I had taught her, those problems, they were in the question paper and I knew the answers. And out of 30, I got 29 then. तो मैं निकल के उसको बोला
उसका नाम अंजू था। अरे मैंने कहा अंजू, उसको एकदम से एम्ब्रेस किया एंड शी सेड क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कल जो तुझे बताया था वो सारे ही तो आए थे। बोली हाँ, पर मैंने कहा मुझे तो आंसर्स भी रटे हुए थे। Yeah, I So, think मजा आता है इफ I यू think हेल्प अदर्स, मजा आता है। yeah, I think that was the thing, that helplessness, purpose, having a habit, being disciplined, all these are the mantras, if our audience can listen from you. मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और जैसे हाँ कि श्योर। आपने अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया और वो भी एक महिला है, जो हमारे आई थिंक इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन, बट आई थिंक समवेयर एज वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन यू कैन टॉक इन दैट रेफरेंस आल्सो, कि जब कभी भी हम एक एज में होते हैं जहां हमें डिसीजन लेना होता है कि भाई हम किस रास्ते पे जाएं, व्हाट एजुकेशन ऑप्शन वी शुड चूज, तो बहुत सारे लोगों के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता कि ऐसे आप जैसे लोग उनके आसपास सर्कल में हो, राइट। कहीं ना कहीं वो अभी क्या कहते हैं, धीरे धीरे या तो पहली जनरेशन होती है जो उस तरह से जा रही थी। मैं आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ, मतलब जब मैं इस स्टेज पे था मैम, कि जब मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे किस तरह डायरेक्शन में एजुकेशन में जाना है, देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी ऑनेस्टली, राइट। तो मुझे लगता है कि आज भी वो ऐसे लोग हैं, चलिए मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, बट अभी भी एजुकेशन सिस्टम नहीं में ऐसे आज बहुत भी सारे है, लोग आज हैं। भी है। कैसे आपकी आपकी क्या राय है? आप तो एजुकेशनिस्ट रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं बकायदा, और आपने तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि कैसे कोई भी अपने एजुकेशन ऑप्शन को चूज करे और गलत ऑप्शन ना चूज करे, और क्या ऑप्शन चूज करे, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। व्हाट विल बी योर ओपिनियन ऑन दैट? इसमें क्या है कि सोसाइटी में हम वी हैव हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स के घरों में हैव नॉट्स आते हैं काम करने, मेड्स। आई एम कमिंग टू द रूट प्रॉब्लम इमीडिएटली। मेड्स आती है, उन लोगों के अमूमन कई बच्चे होते हैं। लड़के को स्कूल भेजेंगी, लड़की जो है वो छोटे भाई बहन को संभाल रही है। लड़की क्यों नहीं गई? वो घर की सफाई कर रही है, बर्तन मांज रही है, थोड़ी बड़ी होगी कुकिंग कर रही है। और उसके बाद एक दिन वो मेड आके हमारे घर कहती है कि मैं जी मैं थोड़ी कुछ करूं, मैं जब घर पहुंचती हूँ तो मेरे को तो रोटी बनी हुई मिलती है। किस कॉस्ट पे मिल रही है ये उसको भी नहीं आइडिया। हमारे घर में भी एक मेड ऐसी ही थी, उसकी एल्डेस्ट डॉटर के साथ यही स्टोरी थी। उसने आके हमारे यहाँ ये कहानी सुना दी। हमने कहा आज तुमने हमको ये बात बताई, खुश मत हो इस पर ज्यादा। उसके 5 बेटियां। तो उसने क्या किया, हम जो छोटी जैसे जैसे बड़ी होती गई, हमने कहा स्कूल भेजो, चुंगी स्कूल भेजो। और चुंगी स्कूल के बाद यहाँ पर, और साइमल्टेनियसली हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। हमने कहा तुम देखो कृष्णा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं, और हम इनकी पेंसिल वगैरह ये सब देंगे। ये चैरिटी है। यदि ईच वन ऑफ अस हम चैरिटी करके 5 बच्चे, मैं 5 कह रही हूँ, 5 भी बहुत कम है, 5 बच्चों को यदि हम पेंसिल रबर लेके 1 घंटा अपने पास बिठाने लग जाए ना, उनका भविष्य हो जाएगा। हमारे घर में जितने वर्कर्स हैं सबके बच्चे पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर्स किया हुआ है, ऑल वेल सेटल्ड, मैरिड टू एजुकेटेड गर्ल्स। दोज गर्ल्स, क्योंकि ये रिजर्वेशन की बदौलत एंड अदर थिंग्स, दोज गर्ल्स दे आर वर्किंग एंड अर्निंग। अब वो हमारे यहाँ आते हैं मोटरसाइकिल पे खुद, बीबी को पीछे बिठाकर, पैर छूने के लिए, ऑन टीचर्स डे, नॉट ऑन होली दिवाली। He used to give me a card, one of my students, धोबी का बेटा। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, टीचर्स डे वाले दिन लेकर आना, टीचर की अहमियत याद रहेगी हमेशा। तो इसलिए हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि यदि हम, ये हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। बुराई को हम कैसे फैला देते हैं? आप गैम्बलिंग करते हैं चौराहे पर, बच्चे टाइम वाइल अवे करते हैं, आप देख लेते हैं उनको, आपके परिचित बच्चे होते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि अरे उसके पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे। आप अपनी ड्यूटी तो करो, दैट इज अप टू देम कि वो क्या करते हैं। यू कांट चेंज एनीवन्स डेस्टिनी। आप कहेंगे अरे मैडम वो जमाना गया जब आप किसी से कुछ कह सकते थे।
कभी उस बच्चे को जब चौराहे पे देखा हो, उसके घर के सामने देखो और पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, वो समझ जाएगा कि ये वो आंटी इसने घर तो कहा नहीं है, लेकिन मुझसे मम्मी के सामने पूछ रही है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हमें ही, ईच वन ऑफ अस, इफ you or me, we are today in a better position and someone is not, it is none of that person's fault. ये ईश्वर की कृपा हम पर है और ईश्वर की कृपा उस पर अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं रहेगी। तो यदि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जो, जैसे अब तो एनजीओ आ गए, हमें क्यों मिलेगा, हम एक वो खोलते हैं एनजीओ, जैसे आपने खोल रखा है, तो आपके पास तो वो सब हैव नॉट्स की मेजोरिटी ज्यादा है जो आपके पास आ रहे हैं, या यहाँ पर भी मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ, तो वी फाइंड दैट पीपल हु आर डिप्राइव्ड इकोनॉमिकली, दे आर कमिंग टू अस। नाउ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वो कोई कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो हम लोगों के कांटेक्ट में वो लोग आएंगे जिनको पढ़ाई में वो अच्छे नहीं है, but they know how to read and write, and they are intelligent, who can follow anything apart from studies. क्योंकि education में there is a big change that has come over. Either you have education of the highest order, IAS officers, engineers. I'm not speaking of only self-financing institutions, no, but IITians, medicos, IAS officers, ये है एक class apart. For this you need genius students, you need people who have the entire एक workforce उनके पीछे, उनके parents, उनके coaching classes, उनके teachers, उनका surroundings, और बहुत कुछ दाव पे लगा होता है। ये बहुत छोटा सेक्शन है सोसाइटी का। Majority is of those persons who are the deprived lot. They may be having 3 to 4 kids. कैसे पढ़ाएं? School fees, all these things. Now these persons they have to see कि बच्चा जैसे पढ़ रहा है पढ़ने दो। कोई यदि उसकी देख लेते हैं, क्लास की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, how the child is doing. If the child is getting good marks, first 5 rank holders या 20 out of a class of 30, he is in first 20, it's okay. But that 20 जो है वो, he will not get a single job, a government job or any job, if he thinks he will be in a service, no, until he improves upon his performance. So jo deprived, those who are not very good at studies, and I have seen in we also have an NGO here in Mathura, and girls who are engineers, girls who are in other fields, qualified professionals, they are coming because they want to get something which makes them a part of society. जैसे कि नहीं हम कहीं चले जाते हैं, हमें केवल यही आता है, we don't know baking, तो हमें baking थोड़ी आनी चाहिए, we don't know how to speak properly, ये हमें थोड़ा आना चाहिए, we don't know how to present ourselves. तो ये job आप लोग कर रहे हैं, this is also part of education. Coming back to another factor, when we say that we are doing for girls, all through हमारा conversation रहा है छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, and we are and so forth. We have not spoken a single sentence on adults, adult females, those who are married, those who are happily married, and those who are not happily married. There is a certain pain in both. The pain of survival. They don't have their own identity. That pain of survival can be eradicated only and only through education. And it is here that you people come to rescue. It is here that your role becomes important. You make them realize कि हमारी life कचरा नहीं है. That lady, when she joins your NGO, when she joins your tailoring classes, when she joins your digital classes, or any other thing, she becomes a part and parcel of a teenage group. 16, 18, 20, 25 साल की बच्चों के
वो ग्रुप में होती हैं, एंड दिल तो बच्चा है जी, तो वो जब उन लोगों के बीच में होती हैं, दे फॉरगेट देयर प्रॉब्लम्स, देयर वोज, देयर वरीज, एंड यू हैव योर डोर्स ओपन थ्रू आउट द डे विच सूट्स देम. तो इन ग्रोन अप परेशान एंड नॉट परेशान महिलाओं के लिए आप लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर. Yeah. They become self-reliable, they become self-sufficient, and they can do anything at home. Tab to they earn, like during the COVID, uh, many students, many ladies also who were not very well off, they made masks, and we sold those masks in jails, at the police headquarters, different institutions, hospitals, and even on chemist shop supply करे हमने. तो उनको मटेरियल दिया गया, और जो पैसे उनको मिले सिलाई के, it was, a booster for them. In Mathura, we are making poshak, mukut. Now it is winters, तो जिनको housewives को knitting आती है, they are very happy, and it goes at nice rates. So that's a very good thing, that these institutions are doing. Yeah, thank you for sharing this. I think if we are able to do our job in a better way and we are able to give them a guidance, तो I think ये छोटा सा एक स्टेप हम लोग ले सकते हैं. और आपने अरे जो नहीं, स्टोरी सुनाया, Mr. Negi, don't say छोटा सा. When I was young, at that point of time, I did not have a place in Mathura where I could go and just polish something. I all through, in our times, singing, dancing, it was a ban, it was a taboo. We did not sing, we did not dance, we did not know anything except studies. Knowledge बहुत सारी है. When I was asked, what are your hobbies? I said debates. Debate किसी की hobby हो सकती है? Essay writing, writing in the editorial. What sort of hobbies? Now I see children who, who are such multicolored talent होता है उनमें. So they can do everything. So livelihood, is one thing, and liveliness is another. So we have to be lively along with the livelihood. so well said. Thank you. And I think you also mentioned about कुछ अपना जो एक NGO है, सोशल कॉज. आप बहुत सारे सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं. आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इसको भी हमको बताया. और जहां तक मुझे याद है कि आप एक और नारी निकेतन से भी जुड़े हैं, तो कुछ हमारे ऑडियंस को उसके बारे में बताएं कि वहां आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, व्हाट इम्पैक्ट यू आर ब्रिंगिंग. तो दैट विल बी ग्रेट. हाँ, एक्चुअली क्या है कि नारी निकेतन, मोस्टली वी हैव नारी निकेतन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंड जो गर्ल्स यहाँ मथुरा में स्टेटस जो है कि दे आर फाउंड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, और समवेयर इन अ मिजरेबल स्टेट, और उनको फिर लाके नारी निकेतन में कर दिया जाता है. Now my experience about Nari Niketan has been not so, promoting, not very good. Because first and foremost, every person has a right or is entitled to, if not a quality, then at least a certain level of comfort is needed. The way Nari Niketans are built and the way they are placed, it is more like a dingy cell, prison. There was a play once I read, Justice. So in that play, it was mentioned that out after some fraud or something, Fodder is the character and he's given a solitary confinement. It was a dingy cell, no air, no sunlight, and the food was just passed from under the door. Nari Niketans ऐसे ही हैं. Moisture, old, dilapidated buildings, उसमें हर जगह खिड़की की जगह, डोर की जगह railings हैं, iron railings. And there is one person, a lady who is in charge, and she is doing multiple tasks. I'm not very specific about the funds, but how can a person who himself is in trouble get solace from such surroundings? वहां नारी निकेतन में जाके instead of
having any improvement on their, you can say, in them as far as the mental this thing is concerned, setup is concerned, these females, they want to run away from Nari Niketan at the earliest opportunity. अब इसके दो reasons हमने sort out किए. एक तो they are not able to adjust to the surroundings, to the food that is given to them, and sometimes there is water, change of climate. बारिश में भी हम गए थे तो it was leaking, and all of them, there were just 10 of them, और वो एक कोने में बैठी हुई थी, सारे में पानी था. So that is one bad state. Secondly, this is one of these basic needs that we do not have in Nari Niketans here. This needs to be washed, taken into concern if we genuinely want to do something. Now comes the second part. These girls who are in Nari Niketan, they are part of some group. It can be a group of prostitution. It can be a group of pickpocketing, those who move in trains, steal things, mobiles these days, purses and pouches. And the members of the gang, somehow or the other, because everyone has a mobile nowadays, God knows how they manage to keep them safe from the securities, but they have, and they are able to locate. Now the earliest opportunity they get, I told them, I said कि ये prison जैसा बना रखा है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? तो उसने कहा कि यदि हम ये prison जैसा नहीं बनाएंगे मैडम जी, तो ये भाग जाएंगे, खिड़की में से कूद जाते हैं. अब कहाँ गए वहां से कूद के पता नहीं. So girls, they do not want to stay in Nari Niketans also. So I don't think that until and unless, again the same problem. If Nari Niketans are treated even as jails, जैसे हमारे मथुरा में jail है, and it has an open atmosphere, food is given, you can converse, you can talk, and you can learn so many crafts. We teach them so many things. So jails की तरह भी हो जाए ना Nari Niketan, then too we can solve some purpose. So instead of keeping them there, it is better to shift them in at least a place where the minimum facilities are given. So my experience with Nari Niketan, and every time I visited Nari Niketan, I was always sad for 2 or 3 days, और समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए, और फिर है कि कुछ कर भी नहीं सकते और लड़ भी नहीं सकते. No, I think एक धीरे-धीरे gradual step is also great to make the difference. And I think आपका जो contribution है, that will be well seen and well supported by others. Although we are coming to... Just a moment, Mr. Negi. One more thing. You can associate education with respect. In a nutshell, I will tell you. Education gives you respect. It gives you confidence. Education gives you a way of life. It frames your thinking, what is right, what is wrong, spiritual element. You start believing in morals and ethics. And in education, you know it is a wealth for a lifetime, and nobody can steal it from you. गरीब आदमी गरीब हो सकता है, जिसके पास धन दौलत होगी, कोई ले गया तो गरीब हो गया. Educated जो है वो तो फिर अपनी बुद्धि के बल पे कहीं नौकरी कर लेगा. Education, you can never be poor, and it is an educated person is the greatest service to society. You can do whatever you want to, like you are doing. And an educated person is never lonely. I'm not speaking of your mobile and Facebook friends. I'm speaking in real life, genuinely, you and me, conversation. कितने लोगों को आप मिलते हो, कितने लोगों को हम मिलते हैं. And while in college, तो मजे ही आते थे. Even when we were sick, we went to college even in 102 temperature. हमें बुखार महसूस नहीं होता था, घर में बीमार लगेगा. And not only me, my friends also. And we used to tell each other, सच में बुखार है या वैसे ही बोल रहे हो? So education has multiple benefits. कोई एक चीज ऐसी नहीं आप point out कर सकते which has equal benefits. Yeah. Each and every benefit जो किसी और चीज में है वो education में. Yeah, that's really correct. And I think that's why we chose to have a conversation on choosing the right education for yourself. Although we are coming close to our conversation, but still we would like to have
Last word from your side for our audience. अगर आपने कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को आज साल के पहले दिन, तो वो क्या मैसेज होगा मैम आपकी तरफ से? I'll just say that as far as the message part is concerned, believe in yourself, trust in yourself, don't forget your identity. You are not somebody, who is a tool. You are not a tool in the hands. You are not a puppet. You accept one. As flies to went in boys, so are we to the gods. Accept only, trust only in one person. किसी की सिफारिश करनी है, किसी से कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो कि वो तुम्हें हिम्मत दे पढ़ने की, कुछ भी करने की। किसी के सामने हाथ खोलने की जगह हमेशा यूं हाथ रख करना चाहिए आप। Never hesitate to ask for some help to improve yourself and never ask for any help financially. ये चीजें दिमाग में रखो और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को कभी मत सरेंडर करो लाइफ में। योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी योर मोटो। एंड व्हेन आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर ये आ जाएगा, आप हमेशा ऊपर बढ़ना चाहोगे, कभी नहीं सरेंडर करोगे किसी भी प्रॉब्लम में। So your self-respect should be your motto. Yeah, great. Thank you. I think the message is very clear. Self-respect, confidence on yourself is the key by Dr. Shobha Pathak. Ma'am, thank you very much once again for coming on the show. It was such an honor to speak with you. और आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने आज पहले दिन ऑफ द ईयर उसका बिल्कुल फायदा उठाया होगा। एंड अगर कुछ भी उसमें से वो ले सके और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर कन्वर्सेशन टुडे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Negi. You have given a wonderful beginning to my year as well. So keep on calling me. It's nice talking to you. So nice of you, ma'am. So nice of you. With that said, audience, we are wrapping up our show, Baatein Uttarakhand Ki, with Dr. Shobha Pathak on choosing the right education. What a great conversation and what a great start to the year. We will meet again next Sunday at 11 o'clock with one of other prominent guests like Dr. Pathak, and we'll talk about certain other topics which can make a social impact. With that said, signing off for this Sunday. Enjoy your rest of the year, rest of the day, and have fun. Thank you very much. And once again, ma'am, thank you very much for coming on the show.